Assalamu alaikum students. In our last draping class, we draped the front bodice block and the back bodice block. In our today's session, we will get to know how we will create pattern from those bodice block. For that sake, I'm having a tutorial and we will watch the tutorial and you will get the idea how we get the pattern from that uh, bodice block. Our today's learning object is the create a pattern from the bodice block and our outcome will be the bodice block. This is how we get the fabrics from our uh, with from achieved from the our mannequin, and we place the detailings like it's a cut on fold, it's the grain line is mentioned the grain line. After doing all of this, what we're gonna do is we are having that bodice block. You can have a dot paper or you can even have a tracing paper and you can have a butter paper to recreate uh, the bodice block and to achieve its pattern. If you have some dotted sheets, that will be more easier to keep it straight, to align its lines. First of all, we will align a center front line that will be cut on fold. You can even tape the muslin fabric, the bodice block on the paper so that it may not slip or move, and then start tracing the lines. As we are using the transparent sheet, all of you know that butter paper and the tracing paper and the dotted sheet, these sheets are transparent, so you can easily achieve the lines. If you don't have the transparent sheet and you having the pattern sheet, then you should use the tracing wheel. With that, you can mention a notch at every corner. Either you guys having a tracing wheel. If you guys are doing pattern making, then you guys must have a tracing wheel. Yes, sir. If not, then you should use any transparent sheet. With the help of Japanese scale, we just achieved our straight lines. Now we will move towards our सर पहले ये कैलिको पे बनाने हैं फिर इसके ऊपर ट्रेस करना है। आप लोगों ने जो कैलिको पे अपनी ड्रेपिंग अचीव की है ना, यस फ्रंट सर। एंड बैक बॉडीज ब्लॉक, उसको आपने मैनिकन से उतारना है, देन उसे पैटर्न अचीव करना है।
In this सर session, we are उसको रख के getting, फिर sheet रख के ट्रेस करना है ये yes, वाली। in this session we are getting to know कि ड्रेपिंग से पैटर्न कैसे अचीव होता है. You can use French curve scale, or you can use other curve shape scale. It's up to you guys. सर फिर इस शीट को कट तो नहीं करना? Just watch the video. ओके आपने प्रॉपर इसे पैटर्न अचीव करना है. ओके सर। When we drape our bodice block, our dart was placed 1 centimeter before the apex point. Now she's circling those ending point of the dart. She's mentioning it's the center front. सर ये जो शोल्डर पे ना साइड पे डार्ट है ये हम लोगों का नहीं है। अगर आपने उसको डार्ट जो है प्लेस किया उसके ऊपर, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो. अब इसकी वो ओके सीम अलाउंस दे रही है, और अगर आपने उसके शोल्डर पे डार्ट अचीव किया तो आप शोल्डर के अकॉर्डिंगली करना. ओके सर, जैसा हम लोगों ने शोल्डर पे दिया। आप लोगों के जो नेक लाइन पे वो 1 cm, और आप लोगों के जो शोल्डर पे 1.5, आर्म होल पे 1 cm, देन आपकी साइड से 2 cm, एंड आपके बॉटम हैम जो है वो 1 cm थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने सीम अलाउंसेस मेंशन कर दी. अब आपने ये डार्ट को दोनों को मैच करके देखना है कि आपकी लाइन स्ट्रेट आ रही है. एंड यू कैन इवन, आप लोगों ने जो पैटर्न बनाया उसके साथ आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं. अगर आपको कहीं पे उसके स्मूथनेस की, लाइन की, शेप की कोई कैलकुलेशन में कोई इश्यू नजर आ रहा होगा, या ट्रेसिंग व्हील से आप इसको ट्रेस करोगे कि आफ्टर मेकिंग अ डार्ट ये किस तरह से आपस में ज्वाइन होंगे, तो फिर उसकी लाइन को ज्वाइन कर. Now she is telling that the dart always should be uh, cut properly. अगर उसके सेंटर पॉइंट को आप प्रॉपर कट नहीं करोगे, देन उसके शेप में डिफरेंस आएगा. इसी तरह से आपने दूसरे डार्ट के साथ भी सेम वही प्रोसेस करना है, एंड देन ट्रेसिंग व्हील से इसको ज्वाइनरी पार्ट्स
ठीक है. So our front is almost ready now. Move towards back. She's basically telling us about how we trace the things and how we put the hole in it to for its further use. You will calculate the same process as we did in the front. Now add some seam allowances, and the joinery will be the same as we just close the dart, and then we put the tracing wheel. The tracing wheel that I achieve the lines, and according to those lines I join the dart. This is our center back. It will be curtain fold. Here it will have a grain line. It is mentioning the dart point. You can cross it by keeping front and back.
lines. If there will be any difference in front and back line, you can even change it accordingly. Match the curves. If the curves are not matching, then you can uh, plus and minus accordingly, and by marking a notch you can put it. Just match the without seam lines, not the seam allowances line. So there is a little difference between our front and back. Now you can manually put that, so that in further when you start doing it stitching, you it may not create the mm, problem. This is how we are getting accuracy in our pattern. Match the side seams, either these are matching. If there is some plus and minus, you can do it accordingly. After that, mark the notches. There is always a point when you drape something. Uh, Sometimes it may be some uh, there is a minor change when you start making a pattern from it, but you can cross check with your original pattern as well, how much change you are facing over there. If you want to add some zip, you can your center back will be cut into two pieces. If you don't want to add some zipper, you no need to mention on the center back, you no need to mention, and you no need to point out any notches over there. On then you need to mention notch on the side seam of the pattern. This is our grain line, and she's putting some details like what center back, back bodies block, center back, and grain line, mentioning the grain line.
Center front will be cut on fold. Start pointing out notches. Start giving the details that you think that it's necessary to mention on the pattern, like she put a notch on the back so that the um, dart is so that the positioning the dart where the dart is matching, and she put the notch on the back that here will be dart will be joined like this. She put the line on the front as well where the dart will be joined, and she put the notches on the armhole to uh, tell the joinery of the front and back with the sleeves. She is telling us about the details, then how it's going to be stitched. The front will be cut on fold, so she made both sides of the front. After doing so, you can just punch your pattern. You can engrave the hole so that you can trace the darts on the fabric whenever you are going to stitch it. So for stitching, keep in mind how you're gonna stitch it, how you are placing the things while you're stitching. Just keep in mind that you're having some notches, and on those notches, you can even cross check your pattern accordingly.
So guys, this is how your side seam will be matched. For zipper, you will add two notches to point out the length of the zip. Neckline can be smoother and can have some notch along the folding line. You need to punch your pattern to keep it safe for the further use. And for notches, we having a tool that will mention the notches. You can place it with the notching machine, or what you can do is you just point out the line for notches as well. You can even, for if you are making a complete collection, if you are having different customers, different people, for that sake you may have some coding accordingly on your pattern. With the puncher, punch your pattern and hang it accordingly. These hangings are available in the market. So guys, this is how we are going to achieve our pattern from our draping block. For the next week, you guys need to do is you guys have uh, your bodice block, drape bodice block. Use those drape bodice block and achieve pattern from those bodice block. If you guys having any question regarding, you can ask me. Is there any question regarding how to create the pattern from the bodice block? No, sir. Okay. So, can you guys show me your bodice block, drape bodice block? Unsa, can you please show me the drape back bodice block? सर अच्छा करती हूँ अभी. Okay. Uswa and Jawad, आप भी मुझे प्लीज दिखा दें. Okay.
उनसा draped bodice block, it's your pattern. सर जो आपने वीडियो बनाई है वो भी बना के दिखाएं आपको? नहीं नहीं, आप मुझे जो लास्ट सेशन में हमने ड्रेपिंग किया ना बैक बॉडीज ब्लॉक की, वो मुझे सिर्फ चेक करवा दे ऑन ओके सर। कैमरा। Excuse me, sir. जी। ओके। इसमें बैक पे बबलिंग क्यों आ रही है जवाब? Sir, देखो इस ये साइड साइड वाली साइड पे ये बबलिंग क्यों आ रही है? ये नहीं आनी चाहिए। इसके नीचे से क्लिपिंग करो, या देखो ये डार्ट तुमने किस तरह से प्लेस किया कि इसमें बबलिंग आ रही है। ओके सर, मैं देख लेता ओके। हूँ। ओके ओके सर। सही है, बाकी मुझे ठीक लग रहा है। बट ये आपका डार्ट इस तरह से ऊपर तक क्यों एक्सटेंड हुआ है? ये तो इधर खत्म हो जाना चाहिए था ना, जहाँ पे आपके आर्म आर्म होल के नीचे आर्म लूज होल किया तक। था। यस, आर्म होल से नीचे नीचे वाला डार्ट खत्म हो जाएगा, और ठीक। जो ऊपर वाला डार्ट था वो आपका क्रॉस बैक पे खत्म हो जाएगा, जो कि हमने वीडियो में भी देखा था। क्रॉस बैक पे खत्म हो जाएगा। ये दरमियान में इस तरह से स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए, इसको भी जरा देख लें कि किस तरह से आपने इसको किया। ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। यस उस्वा, फाइन, फ्रंट ठीक लग रहा है मुझे। बैक दिखाएं, इधर ऊपर क्यों थोड़ी सी बबलिंग आ रही है? इसको जरा देख लें कि ये बबलिंग क्यों आ रही है। इसको बेशक फिंगर से आप इसको मूव करें टुवर्ड्स साइड से, तो ये खत्म हो जाएगी। बैक पे आपने क्या किया हुआ है? आपने भी नीचे वाला डार्ट एक्सटेंड करके ऊपर तक लेके गई है? कीप नीचे वाला। ये सर ये यहाँ तक हाँ, जो वेस्ट वाला डार्ट है वो डार्ट आप लोगों का, जो आपकी लाइन आ रही थी आर्म होल से नीचे वाली, जो कि फ्रंट पे बस्ट की लाइन आ रही है, बैक पे शोल्डर ब्लेड की लाइन आ रही है, वो वाली लाइन पे आपने खत्म करना है। और जो ऊपर वाला डार्ट है आप लोगों का, उसको आप लोगों ने क्रॉस सर बैक वही पे खत्म करना है। सर वहीं पे खत्म हो रहा है, वो शायद वो बबल आ रहा है इसलिए आपको लग रहा है ये आर्म होल के साथ साथ ही खत्म हो रहा है यहीं पे। ओके, आपने इसको देख लिया है। बबल आ रहा है मुझे जो शायद इसलिए नजर फिर आ वो रहा आ है, रहा मुझे एक कंटिन्यूस लाइन नजर आ रही है। है। ओके सर। और फिर इसके पॉइंट मार्क करके इसको इन्वर्ट भी करना है आपने इसको, जिस तरह से आपने फ्रंट के डार्ट्स को इन्वर्ट किया हुआ है। ओके। सर किया हुआ है डार्ट इनवर्ट से, इसको इधर को किया हुआ है, सेंटर बैक की तरफ को ये भी किया हुआ है। बट मुझे जो विजुअल नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो बाहर है डार्ट इस तरह से कुछ। ओके सर, मैं एक दो फिर चेक कर लेती हूँ। ओके ओके। थैंक यू सर। यस उनसा। फ्रंट। ओके। सब बैग पे इतनी ज्यादा बबलिंग क्यों आ रही है? आप इसको जरा देखें। सर यही तो समझ नहीं आ रही है क्यों आ रही है। आपने नीचे से फैब्रिक क्लिप किया था?
पेज से साइड सीन से एक्स्ट्रा यस सर। पैसा क्लिक किया है? यस सर, ये देख। शो मी। नहीं सर, इधर से नो सर, ये नहीं किया। तो इसको क्लिक करोगे, देन इसको जितने भी बबल्स आ रहे हैं उनको साइड सीन पे लेके जाओ और फिर उसको प्रिंटिंग करो उसकी। ओके सर। ओके। सर ये आज करके फिर नीट करके फिर आज ही सेंड कर दें उधर ही? यस, आज की डेट है आपके पास, आज की डेट में इसको ठीक करके मुझे सेंड कर दें। ओके सर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे ड्रेपिंग से पैटर्न अचीव करके वो सेंड करना है। मैं भी आप लोगों की असाइनमेंट जनरेट कर देता हूँ। तो टिल देन नेक्स्ट वीक कीप वर्किंग। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर।